Recording in progress. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। So today the same lecture that we are going to continue. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. So आज we will continue the previous lecture in which I told you how to question and answer in on a specific tense. That for the practice of tenses, that I've told you that tenses somewhere those are needed when you have to talk about in some time, past or present or future. For that you need tenses, practice of tenses. So last time started this lecture. This is last time lecture that I told you that how to start writing. Writing is a significant productive skill. It is essential for the language learners in the following way. This I told all that, and after that I told you that you will use past simple tense for to tell what I did yesterday, and then what I did last year, then my childhood memories or something, some memories that belong to past, then present continuous where you tell what is going on now, present simple, past. These three tenses I told you those are very important. Present simple, in which you give some introduction or you tell daily routine or some good or bad habits you tell. Then in past simple you tell something that happened in past, and then present continuous. These three tenses we practiced, and I asked you to write something and send me that writing in a written form to me. Today we'll continue that. Next important is present future simple. Future simple. In future simple you simply you tell your you simply describe your future plan, you tell your wishes, your expectations. मेन एक्सपेक्टेशंस मीन उम्मीद, कल बारिश होगी, उम्मीद यानी जो चीज़ उम्मीद है कि कल होगी उसके लिए यू यूज़ फ्यूचर सिंपल। या कोई आप प्लान बना रहे हैं फ्यूचर का कि आप कराची जाएंगे तो उसके लिए आप फ्यूचर सिंपल यूज़ करते हैं। और इसी तरह अगर आप कोई फ्यूचर के होप और एक्सपेक्टेशंस के अलावा अगर आप कोई डिस्क्राइब करना चाहते हैं
your intentions, कोई अपनी अगर आप बताना चाहते हैं कोई इंटेंशन फ्यूचर के बारे में। तो उसके लिए आप फ्यूचर सिंपल यूज़ करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आई शैल राइट इट राइट इट ऐसे राइट द ऐसे टुमारो, मैं ये ऐसे कल लिखूँगा। वी शैल मीट सून, हम जल्द मिलेंगे। आई शैल टेक एडमिशन इन GC University। Future plan, I shall write the essay tomorrow. Then expectations, we shall meet soon. This is expectation. And your attention, irada, I shall take admission in GC University. This is your intention. So you talk about these things in future simple tenses. For that you use I shall or I will. Both are equally good for every word, every pronoun and noun. Shall and will. A little difference between these two, shall and will. There is a little difference between will and shall. With I, if we add shall, it means that I am planning, and if I write I will, then describes that I am having good intention for that. So I shall write the essay tomorrow. If I write I will write the essay tomorrow, that I will definitely write that essay tomorrow. That a little stress, a little that you intention you are saying you want to lay stress on that, then you use will instead of shall with I and we. However, you don't bother that shall or will both are equally equal for all the pronouns now. They are being used. These three tenses, and then next tense that is very important that you have to work on, that is the present perfect tense. Present perfect, what has happened recently, what has completed recently, जो अभी हाल ही में कोई काम मुकम्मल किया है तो उसमें प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करते हैं। बहुत सारे लोग प्रेजेंट पास्ट सिंपल को ही प्रेजेंट परफेक्ट के लिए यूज़ कर लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आप कहना चाहते हैं कि मैंने अभी अभी खाना खाया है, तो यू विल से आई हैव टेकन द फूड अ लिटल अर्लियर, तो आई हैव टेकन आप यूज़ करेंगे। तो लेकिन बात ये भी कहते थे टुक द आई टुक दैट मील और वट एवर। तो प्रेजेंट परफेक्ट थोड़ा सा डिफरेंस है। पास्ट सिंपल जब आप सेकंड फॉर्म लगाएंगे ना, ये ऊपर हमने पास्ट सिंपल सबसे पहले ये पढ़ा था, पास्ट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल और ये पास्ट सिंपल। जब ये पास्ट सिंपल पढ़ा था, व्हाट आई डिड यस्टरडे, व्हाट आई डिड लास्ट ईयर, माय चाइल्डहुड मेमोरीज, दैट आई टोल्ड यू टू राइट something on that. According to that, I hope that you have written now the same that this is past simple, but sometimes it does not tell the timing. For example, I went to Lahore. For that, if I don't use yesterday, you will not understand when I went to, when did I go over there. For example, I say I completed the essay, and you don't know when I completed the essay, yesterday, the year earlier, or the month earlier. So past simple does not tell that about the, that's fixed, not fixed timing that it tells.
until we add some word like yesterday, previously, last, or something last month or previous month, something some word that we add with second form, we cannot understand the timing. But present perfect tense that tells that it whatever the action that is performed recently. It tells is used to tell some action that has taken place a little earlier. For that, we use some specific adverb of time like recently, already, yet, just earlier. And like that, these adverbs of time, those are used in present perfect tense. So you have understood that we use has or have in these tenses. For example, I have completed my graduation. It will tell that recently that has happened. It is not necessary that you add recently, or you may add as well recently. I have already taken 2 cups of coffee. You have not received any money yet. Jamil has got has reached home a little earlier. Kareem has just
left the office. So all tell that action that completed a little earlier. और इसके अलावा बाज़ ऐसे काम जिसका असर अभी तक बाकी है, जैसे आपने खाना खाया तो उसका असर अभी तक बाकी है, तो उसके लिए भी इस टेंस को इस्तेमाल करते हैं। तो अगर कोई कहे कि और खाना खाएंगे तो आप कहेंगे आई हैव टेकन लंच। तो इसका मतलब ये है कि आप नहीं खाएंगे क्योंकि अभी उसका जो खाया उसका असर बाकी है। फोर्थ, present tense. uh, First we studied present simple tense, number one, then past simple, and present continuous, third present perfect, and fourth present tense. That is important to understand. That is present progressive perfect continuous or progressive, present perfect progressive or present perfect continuous, in which you sometimes you need to tell the time of an action, that for how long you have been studying. It is often you use that to tell, we tell the timing as well. That is very, sometimes that gets very important to tell for how long that you have been doing something. For that what we do, that to describe an action, that continued for some time, and you want to tell the timing of an action, the tell how, for how long your action or activities continued. It is a little to understand how we use present perfect progressive. In this tense, what we do, that we use have been or has been, and then present participle form, that is fourth form of verb, adding ing for the first form, and then we tell since or for. We use the word, the conjunction since or for. Since and for, that is a little not difficult, a little difficult, not very difficult. It is to understand the use of since or for. Let's consider the first sentence. I have been waiting for you for an hour. And this sentence tells you that you have been waiting. That a person, some person is going to come to you, but you is not coming, and you have been waiting for him for how long? For an hour. Here the word for that is used to tell how long, the duration. It tells how long.
For is used to tell how long. For is used I forgot to add inverted commas. For is used I had inverted commas. I wanted to color it, but whole color would change. For is used to tell the duration of the timing. Like for 2 days, for a week, for a year, for many days. This use of for. The other conjunction that we use to tell the duration or sorry, another conjunction that is used to describe the timing for how long that you have been doing that is since. Since is used to tell when an action has started. That it does not tell the timing, it tells how, when. It is the answer of when. When is important to remember that when you tell when it started कब से, तो वो फॉर यूज़ होता है कितनी देर से, और जब हो कि कब शुरू हुआ तो उस वक्त हम यूज़ करेंगे सिंस. सिंस यस्टरडे कल से, सिंस मॉर्निंग, सिंस यस्टरडे. Since 2020, it is wrong to say since a week. Since a week is wrong because a week is not the when we'll say when you started, you cannot say uh, since a week. You will say for a week. Since morning, since yesterday, since 2020, since January, etc. So this is the difference of for and since. Then you will start writing some sentences. You will tell for how long the action that you have started, what is the time, that what time has gone. For example, I
have been resting for 3 hours. She has been decorating the house. The house. You so you tell me what should come over here. Morning. वो सुबह से घर को डेकोरेट कर रही है, तो यहाँ क्या आएगा? यू टेल, यहाँ पर क्या आना चाहिए? यस राइट, सिंस मॉर्निंग. The government has been planning for years to get new resources, power resources, energy resources. गवर्नमेंट कई सालों से प्लान कर रही है कि नए एनर्जी रिसोर्सेज कैसे हासिल किए जाएं. पेट्रोल एनर्जी रिसोर्स, इसके अलावा वुड लकड़ी भी है, और इस तरह के गैस, अंडरग्राउंड पेट्रोलियम निकलता है, तो उससे जो सुई गैस वगैरह या गैस, ये सब पावर रिसोर्सेज हैं. तो हमारी गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि किस तरह हम नए एनर्जी रिसोर्सेज, तो नए एनर्जी रिसोर्सेज में इस वक्त टॉप पर सोलर एनर्जी है. तो वी शुड टर्न टू सोलर एनर्जी. हमें सोलर एनर्जी की तरफ मुड़ जाना चाहिए, क्योंकि इससे पेट्रोल की बचत इतनी होगी कि जो अनकरीब जो है वो इसकी प्राइस इतनी बढ़ जाएगी, या फिर वो वैसे ही फिनिश हो जाएगा. तो उसके बाद हमारे पास कोई ऐसा एनर्जी रिसोर्स होना चाहिए दैट वी कंटिन्यू लिविंग. फॉर दैट सोलर पैनल्स, दोज आर नेसेसरी टू पुट टू arrange and on your house tops and on your car as well. Everywhere that you can use that solar panel. So, and a solar panel that traps solar energy, the energy of sun, and then after that it converts into electrical energy or other power energy. So in this way, solar energy that is our need now, and our government now that it is popularizing that idea that solar energy we should all should use that. He has been planning to, has been thinking or smoking. Again, tell me what should come over here. Childhood. For childhood or since childhood? चाइल्डहुड बताता है, आंसर है कब से, तो इस वजह से क्या आएगा? सिंस. जब कब से का आंसर आए तो सिंस, और जब आए क्वेश्चन कितनी देर से, तो फिर फॉर. तो ये 6 टेंसेस हुए हैं. पास्ट प्रेजेंट के 4, ऑल द 4 टेंसेस आर प्रेजेंट. प्रेजेंट सिंपल,
and then past simple, present, all the four presents: present simple, present progressive, present perfect, present perfect progressive, four, and then past simple and future simple. Those all are very important. Past simple, then present continuous, future simple, present perfect. I write your progressive so that you don't misunderstand. Future simple, present perfect, progressive, and then last one is past continuous or past progressive tense. That you tell that continuity of some action in past. He, we, were. You tell the continuity of an activity in past. For that we use was, were, and present participle form. He was listening to me. I was wondering about on your successful jump. I was wondering on your successful jump or leap. They were not bothering my advice. वो मेरे एडवाइस पर कोई भी गौर नहीं कर रहे थे, कुछ नहीं, उस पर कोई फ़िक्र नहीं कर रहे थे। बॉदर का मतलब होता है फ़िक्र करना। The students were working hard to get the position. So past progressive tense. All the tenses that I wanted to teach you, that is all the four present tenses: present simple, then present progressive, then present perfect, then present perfect progressive. All the four present tenses: past simple, past progressive,
and then one future tense, future simple. These are seven tenses that you should have practice. You have to get practice a lot. In present simple, present progressive, present perfect, present perfect progressive, past simple, past progressive, future simple. That you have to understand what the helping verb that is used in present simple and present progressive. All this is game of use of the auxiliaries and modal verbs. Now it is time to have a little practice. I am going to ask some questions. You will answer me in the same tense that I will ask the question in that जिस टेंस में मैं क्वेश्चन करूँगा उस टेंस में आपने मुझे आंसर देना है. तो आंसर एक्टिविटी वन. What are you doing? You have to answer me this question, what are you doing, and you will answer me in the same tense. Who has taken my lunch? Why do you get hyper? Get angry on minor issues? छोटी सी बात का बतंगड़ क्यों बना लेते हो? Which season do you prefer? कौन सा सीज़न आपको अच्छा लगता है? Will you please put that file in my bag? Will you they not notice the arrival of
Have you heard from him recently? Does she not press your dress? Did you understand my viewpoint? Since when have you been walking on foot for how long has he been looking for his lost dog? Did you arrange a party in his honor? Have you visited Munir already visited this place? Have you not counted the notes yet? Will you will I stay in Gujranwala for some days? Have you not found the guilty?
Has he been mowing in the lawn since dawn? Did you like your new bike? Are you still trying to finish the impossible? क्या ऐसा काम जो मुमकिन ही है अभी भी तुम उसको मुकम्मल करने की कोशिश कर रहे हो? Was he taking rest in peace? These 20 questions you have to answer me. These are from different tenses, mixed up tenses, and then you have to answer me in the same tense that I've used. That is very important in your understanding of the tenses. This activity, that is very important. I will take these questions in a new place so that remember which week that we are working and when we have to finish our syllabus. So week 10, activity 1. This you are now. This I'll. You are getting that, and after getting that, you have to answer these questions in the same tense. That is very important to remember. Okay, here is some boy that some student is. I'm looking over here. I will offer you to now you to ask any question about that whatever that lecture that you have attended. Please
ask any question that is in your mind. फिलहाल अस्सलाम वालेकुम। फिलहाल तो उस्ताद जी कोई क्वेश्चन ज़हन में नहीं आ रहा। ये आप टेंसेस का जो शफलिंग है वो अच्छी तरह समझ चुके हैं। तो इसके क्वेश्चंस के आंसर मुझे आपने ज़रूर भेजने हैं, और प्रैक्टिस कर रहे हैं ना बोलने की। फिलहाल तो काफ़ी कम है, क्योंकि बिल्कुल इंग्लिश में चल रहा है और इंग्लिश मेरी फास्ट नहीं है, तो आप ही समझ सकते हैं, इस वजह से फिर प्रैक्टिस नहीं हो ठीक है। इस तरह की दिक्कत है। हाँ, तो वो ना आपकी वोकेबलरी ज़रा पुअर है, तो वोकेबलरी के लिए मैं आपको सुजेस्ट करता हूँ कि कोई बुक जो है ना मैंने आपको रीडिंग सर्कल बताया था शायद पहले। जी, रीडिंग सर्कल बताया था लेकिन इतना सही नहीं है। अच्छा, तो मैं एक बुक मैंने भेजी थी आपको, चार्ली एंड चॉकलेट फैक्ट्री। जी, उसके मैंने एक पेज शुरू वाले पढ़े थे, जिसमें वो 2 पेज स्टार्ट वाले पढ़े थे, जिसमें वो 5 लफ्ज़ का तज़किरा है, हाँ। 5 जुमले हैं, और ये मुझे एज ए बेसिस समझ आया था कि इसको काम करते रहें हम्म। और आगे बढ़ते रहें। हाँ, बस ठीक है, उसको ना रीडिंग लाजमी करें रोज़ाना। तो उसके लिए ये तकरीबन मुसलसल 2 पेज से जो मैं मुकम्मल कंप्लीट करता था, ये तकरीबन इसमें पार्ट ऐसे नहीं है कि आप छोड़ दें और पार्ट कुछ ऐसे हैं। हम्म। मेन चीज़ों का पता नहीं है कि भाई किस जगह कोई लफ्ज़ की आवाज़ जो है ना वो स्किप हो रही है, हम्म। इस वजह से फिर परेशानी होती है कि भाई इस लफ्ज़ में मसलन सी का लफ्ज़ आ गया है, एफ का लफ्ज़ आ गया है, आर का लफ्ज़ आ गया है, तो किस जगह पे पढ़ा जाएगा, किस जगह पे नहीं पढ़ा जाएगा, हम्म। ये मुझे तरीका नहीं आता, तो उस वजह से फिर मेरी रीडिंग में काफ़ी दिक्कत होती है। तो आप अगर इसी क्लास में ही सिर्फ 5 मिनट्स मुझे रीडिंग करके इन्हें वो सुनाएं, हम मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, तो वो जो है सफ़ा आप पढ़िए, तो मुझे मैं आपको कुछ जी, हेल्प कर देता हूँ। आप शेयर करें, मैं आपको पढ़ देता हूँ। तो ये आपने पढ़ लिया है, ये यहाँ से आप यहाँ से स्टार्ट करें। जी, मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ। The house was since nearly dark because मेरा सवाल was जब ये जी एच इकट्ठा आता है ना, तो उसकी दो साउंड्स हैं, या तो फ की साउंड देगा या फिर कोई आवाज़ नहीं देगा। बाज़ वर्ड्स हैं जिनमें जी एच साइलेंट हो जाता है और बाद में फ की आवाज़ देता है, तो यहाँ पर फ की आवाज़ दे रहा है इनफ। तो जहाँ पर जी एच आएगा वो ग फ यानी इनफ, फा की आवाज़ फ की साउंड देगा। ये तीन आवाज़ें हैं जी एच की, नंबर 1 फ, नंबर 2 ग, और नंबर 3 ये साइलेंट हो जाता है। तो बाद में ये साइलेंट हो जाता है, जैसे रफ़ है वर्ड रफली, तो जी एच साउंड फ दे रहा है। बाद में जैसे प्लो है, PLOU GH, तो यहाँ पर जी एच साइलेंट हो जाता है। तो ये जी एच बाज़ दफ़ा फ की साउंड देता है, बाज़ दफ़ा ग की भी देता है, और बाज़ दफ़ा साइलेंट हो जाता है। जी आगे पढ़िए। were so many people and life was extremely
calm, approachable, call them ये जो वर्ड है ना अनकंफर्टेबल, आपने कोशिश तो सही की, लेकिन पता क्या आपने किया है, आपने जब उसको ब्रेक किया ना वर्ड को, ठीक है, ये बहुत अच्छा होता है कि आप वर्ड को ब्रेक करें और हर एक पार्ट को अलग-अलग प्रोनाउंस करें, इससे स्पेलिंग भी आपके ठीक होते हैं। तो आपने पढ़ा अनकम्फर्टेबल, जबकि आगे जब फॉर आया तो वो आपने सही पढ़ा। तो दरमियान में जब इस तरह जब आप तोड़ रहे हैं तो अलग जो पढ़ रहे हैं, जैसे फॉर आपने अलग किया तो उसको फ्रा जो पढ़ा, तो उस पर ज़रा आपने वो रखना है कि आप इसको जिस तरह बाद में फॉर पढ़ लिया तो यहाँ पर भी तो फॉर पढ़ना चाहिए था। ये चीज़ जब इस तरह का वर्ड आ जाए कॉम्प्लिकेटेड, या जो जिसको पॉलीसिलेबिक कहते हैं, तो पॉलीसिलेबिक वर्ड में हर सिलेबल को अलग अलग प्रोनाउंस करना, दैट इज़ वेरी गुड आइडिया। तो ठीक है आपका, जैसे पीछे आपने एक्सटर्मली पढ़ा, तो एक्सटर तो नहीं है ना वर्ड, ई एक्स के बाद टी आर ई है, तो टी आर ई को आप टर तो नहीं पढ़ सकते ना, ट्री पढ़ेंगे, एक्सट्रीमली, ठीक है ना। यानी आप का जो ब्रेक करने का तरीका ठीक है, लेकिन हर वर्ड को, हर सिलेबल को, जो पार्ट ऑफ वर्ड होता है ना उसको सिलेबल कहते हैं, तो हर सिलेबल को आप अलग से जो है वो गौर करके पढ़ें, तो देन इट विल गेट बेटर। हाँ जी, कंटिन्यू प्लीज़। जी। और ये जिस तरह आपने बताया ना कि ट्री हाँ ये मतलब इसकी आवाज़ जो हमने डिस्कस करी कि ट्री करना है, हाँ उसके बाद ये आगे हाँ, ट्राई किया आपने कि आपने टर का आपने अब एक्सटर्मली पढ़ा अपना। नहीं, अब देखिए आपने पढ़ा है टर, आपने वर्ड पढ़ा टर, एक्सटर्मली पढ़ा आपने, लेकिन टी आर ई तो टर कभी भी नहीं बनता ना। जी तो ये बस आपने इस पर गौर रखना है कि ये क्या आवाज़ें देगा। ये असल में जब लेटर्स मिलाकर साउंड्स बनाए जाते हैं ना, तो उस वक्त ये सारा समझाया जाता है कि कैसे है। तो वो आपका तो फिर बहुत अर्ली जो वो आपका जो है वो जिसमें आवाज़ें साउंड जो है वो लेटर्स की साउंड्स, वो और उनको कंबाइन करना साउंड्स को, वो वाला आपको फिर करना चाहिए थोड़ा सा काम। उसके लिए यूँ करें। हाँ हाँ, मैं आपको इसके लिए फिर मैं आपको बताता हूँ कि आप मार्केट में जाएं, रीडिंग सर्कल नहीं है तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग सर्कल ही हर एक के पास हो, हर एक जगह पर अलग सिलेबस पढ़ाया जाता है। तो आप, ये टफ़ है, ये नावल जो है ना ये टफ़ है, आप इसको अभी छोड़ दें। आप जाएं मार्केट में और उसे कहें कि जो क्लास जो छोटी क्लासें हैं ना, क्लास जो मतलब प्राइमरी क्लासेस हैं, उसका जो सिलेबस जो भी आपके पास जो मौजूद है उनमें कोई बुक दिखाएं। उस मिसाल के तौर पर आप उसे कहें कि क्लास 2 की बुक या क्लास 1 की बुक, बल्कि क्लास 1 की ही लें, वो क्लास 1 की बुक लें, उसमें फिर आपको ना वो साउंड्स को जोड़कर वर्ड बनाना आएगा, वो ख़त्म कर लें। फिर उसके बाद क्लास 2 ले आएँ, क्लास 3 ले आएँ, लेकिन रीडिंग आपको इस तरह करनी पड़ेगी, एक दिन में नहीं तो 2 दिन में एक बुक ख़त्म हो। इस रफ्तार से चलें तो फिर आप जो है वो बहुत जल्दी पिक कर लेंगे सारा। तो इसके लिए आपको खर्च करना पड़ेगा, बुक्स ख़रीदनी पड़ेंगी, तो इससे बेहतर ये है कि आप किसी लाइब्रेरी में जाएं और लाइब्रेरी में जाकर जब वो बुक उनसे कहें कि ये जो अर्ली स्टेज की बुक है वो मुझे निकाल कर दें, तो ये सबसे अच्छा है, बजाय इसके कि आप बुक्स ख़रीदें और उसको फिर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। तो लाइब्रेरी में किसी में चले जाएँ और वहाँ पर जो वो ये बुक्स आपको अवेलेबल होंगी। लाइब्रेरी का थोड़ा बताइएगा कि लाइब्रेरी में किस हाँ, तो सेकंड है ये कि आप नेट को यूज़ करें। जी नेट को यूज़ करें, इसमें आप मुझे दूसरी चीज़ आपने बताई कि एक चीज़ आपने बताई कि अभी डेली की बुनियाद पर मुझे अपनी कुछ बुक मिलेगी मैं पढ़ पाऊँ। अब यहाँ पर आप जो मिसाल के तौर पर मैंने आपके सामने स्क्रीन नज़र आ रही है, फ्री जी बुक्स फॉर इंग्लिश, बुक्स फॉर किड्स, ये आप लिखें तो आपके पास बहुत सारी यहाँ पर ऑनलाइन बुक्स फॉर किड्स, ये बेस्ट वेबसाइट्स यहाँ पर आ जाती हैं। ये आप देखिए, ये ऑक्सफोर्ड आउल है, स्टोरी ऑनलाइन है, इंटरनेशनल चिल्ड्रंस डिजिटल लाइब्रेरी है, ओपन लाइब्रेरी है, तो ये यहाँ पर काफ़ी सारे आ गए, ये देख रहे हैं ना आप। जी
तो आप इसका बेशक स्क्रीनशॉट ले लें और इनको आप इन जो ये वेबसाइट्स हैं इसको आप लिखें तो आपके सामने बहुत बेशुमार बुक्स आ जाएंगी। आप कोई भी बुक उसमें जो है वो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है ना भैया? वो ये बुक्स जैसे यहाँ ठीक पर है, बताइए। मैं ये चाहता हूँ कि आप स्टेप बाय स्टेप मुझे दें कि भी ये आप करके इस तरीके जिस तरीके से आपने मुझे लिखना कि मैं गाने कैसे पढ़ूँ, तो आपने मुझे मवाद मुहैया करके भी गाने की मैं प्रैक्टिस करूँ, मैं सुनाऊँ, तो नहीं मेरे अब लिए ज़्यादा आसान रहेगा। क्योंकि मतलब मुझे किताबों जब मैं देखता हूँ तो थोड़ा होता है कि नहीं ये पढ़ूँ वो पढ़ूँ ये पढ़ूँ, मुझे मुश्किल यानी रास्ता नहीं मिल पाता। अब ये देखिए जैसे मिसाल के तौर पर ये वाली आ रही है जिंजर द जिराफ। ठीक है, ये डूइंग माई चोर्स, एब द सर्विस डॉग, ये कौन सा मैंने खोला है? हाइड एंड सीक, ये फॉर चिल्ड्रंस बुक। ठीक है, मंकी पेन, तो ये आप यहाँ पर ये सारा आ जाता है फ्री चिल्ड्रंस बुक एवरी वीक। ये आप खोलें तो मैं एक बुक तो आपको है नहीं कि जो मैं कहूँ कि ये बुक करें, आप ये यहाँ से बुक्स खोलते जाएं और पढ़ते जाएं बस। ठीक है, ये आप देखें जैसे मंकी पेन ये आप लिखें तो उसके बाद फ्री चिल्ड्रंस बुक आ जाएंगी और जिसमें बेशुमार आपको जो है वो मवाद मिल जाएगा। ये आप उसको पढ़ते जाएं बस। ठीक समझ आ गई? जी, और इसमें अगर ये भी होता है कि स्टार्ट फ्रॉम लर्निंग आवाज़ में जो आवाज़ ये सारा जो है ना वो आवाज़ जब आप सिंपल किताबें पढ़ेंगे ना तो जैसे आप अभी आपने पढ़ के सुनाया ना तो आप जो सिंपल वर्ड थे ना उनको सही कर रहे थे, कोशिश प्रोनाउंस करने की सही कोशिश कर रहे थे, तो दैट इज़ गुड। तो वो सही है आपका जो है वो उसको कंटिन्यू करें। ठीक है जी, नेक्स्ट वीक में मिलते हैं फिर इंशाल्लाह। ठीक हो गया जी। बहुत 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 शुक्रिया आपका, आपने बात करके सिखा दिया। ठीक।